नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं eVidya चैनल नंबर 11 और इस चैनल के अलावा ncertofficial हमारा यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसे हम लेकर आए हैं टीचिंग लर्निंग इंटरवेंशंस फॉर इंक्लूसिव क्लासरूम्स पर, जहां पर हम अपना समझ का दायरा बढ़ाते हैं समावेशी कक्षा के प्रति। आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही हैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस तबस्सुम नूर। तबस्सुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस विशेष कक्षा में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस स्पेसिफिक सेशन इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट। इट्स प्लांट किंगडम। और जब हम किंगडम की बात करते हैं तो हमें पता है कि किंगडम बहुत बड़ा और वास्ट होता है। ऐसे ही प्लांट्स यानी कि पेड़ पौधों का जो किंगडम है, साम्राज्य है, वो भी बहुत बड़ा है। बच्चों, उसमें जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो भी। और आपको इस चैप्टर के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट जुड़ चुकी हैं, तो चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस रेखा चौधरी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। और मैम के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ आप सभी को दे दें। बच्चों, आप हैं पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय दिल्ली कैंट दिल्ली से। तो आपके मन में कोई भी सवाल आए प्लांट किंगडम को लेकर, इनके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, अगर इस चैप्टर में आप कहीं पर अटक गए हैं, तो आप हमारे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800 444 559। Either you can drop a mail as well. हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class11@ciet.nic.in। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो आप जाएंगे लाइव चैट बॉक्स में और वहाँ पर अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों के साथ, अपनी क्वेरीज़ के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और अपनी डाउट्स को क्लियर करें। तो बाय द टाइम हमारे लर्नर्स हमसे जुड़ते हैं, मैम हम आपके पास आएंगे। एज वी हैव शेयर्ड कि हमारा आज का टॉपिक है प्लांट किंगडम। जी मैम। अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है मैम। जी मैम। तो क्या कुछ स्पेशल कंटेंट लेकर आए आप हमारे सभी लर्नर्स के लिए मैम? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम प्लांट किंगडम और उसकी एक क्लास एल्गी के बारे में ज़रूर देखेंगे। जो डिवीज़न है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है प्लांट किंगडम का, और इस डिवीज़न में कौन कौन सी क्लासेस शामिल हैं, तो वो हम इस पे बात करेंगे। तो एल्गी के बारे में हम जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने कहा, एल्गी प्लांट किंगडम में। तो मैम, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस सेशन। जी मैम, बिल्कुल। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन में वेरियस सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस की। तो हमारे यहाँ पर 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम के लिए हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम classification is the earliest one. It was based on vegetative characters, or we can say that superficial morphological characters. This was given by Carl Linnaeus and it was based on endoecium structure. ओके तो मैम, जैसे भी आपने कहा कि सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, तो ये जो टर्म है एक टेक्निकल टर्म साउंड कर रहा है, राइट? इसकी अपनी कुछ डेफिनेशन होगी। तो हमारे सभी लर्नर्स को बताइए मैम, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स को कहा जाता है जिसे आप एक्सटर्नली अपीयरेंस के थ्रू इन्हें देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर ऑफ लीव्स, इस तरह के कैरेक्टर्स जो कि विजिबली हो एक्सटर्नली किसी भी लेमन के लिए, उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो लीनियस का आर्टिफिशियल सिस्टम जो है दैट वाज बेस्ड ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो मैम, यहाँ पे एंड्रोशियम स्ट्रक्चर की आपने बात की है। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम की बात करें, तो हमारे जो लर्नर्स हैं वो इस जो वर्ड है, इस टेक्निकल टर्म को किस तरह से समझें? जी, यहाँ पर 2 टर्म्स की मैं बात करूँगी, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एंड्रोशियम कहा जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहा जाता है। जी, इसके बाद आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आगे तक कंटिन्यू नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ सम ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स इनमें थे
कि दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, बिकॉज ये कुछ ही फ्यू मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स पर बेस्ड सिस्टम था, इसीलिए क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को भी ये एक साथ नहीं रख सकता था। और इसमें इक्वल वेटेज जो है वेजिटेटिव और सेक्सुअल करेक्टर्स को दी गई थी। ये एक्सेप्टेबल नहीं थी बिकॉज जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं दे आर इजीली अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। Next we have natural classification system, and this system is based on natural affinities among the organisms. ओके तो मैम यहाँ पर हम अगर स्लाइड में देखें तो नेचुरल एफिनिटीज एक वर्ड है, एक जी term बिल्कुल है, मैम। और इसके बारे में हम और डिटेल में आपसे जानना चाहेंगे मैम। नेचुरल एफिनिटीज का मतलब यहाँ पर है मैम नेचुरल एबिलिटीज ऑफ द प्लांट्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फीचर्स एज वेल एज इंटरनल फीचर्स, जिसमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उनकी एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सब शामिल किए जाते हैं। इस तरह का सिस्टम बेंथम और हुकर ने दिया था फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट सिस्टम जो अभी हम फॉलो करते हैं दैट इज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड इट इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ऑर्गेनिजम्स. It assumes that organisms in the same taxa have the common ancestor. ओके मैम, टेक्सा का जिक्र किया आपने, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या टेक्सा की वेरियस अलग अलग तरह के होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने तरह के होते हैं? जी मैम, टेक्सा जनरली हमारी क्लासिफिकेशन यूनिट है. We have 7 taxonomic categories. The highest one is the kingdom, as we are studying plant kingdom. There is animal kingdom as well. There is a kingdom for bacteria as well. So after the kingdom we have phylum or division. Phylum for animals and division for plants. And after that we have classes, order, family, genus and species. So there are 7 taxonomic categories. Okay. Now other sources to resolve the problems in classification of plants. So there are 3 terms. Numerical taxonomy, it is based on all observable characteristics. Cytotaxonomy, it is based on cytological information. And chemotaxonomy, it is based on chemical constituents of the plant. So all these taxonomics are used for the classification of plant. Okay, ma'am, if we talk about cytological ma'am. information, what exactly does it mean by cytological, ma'am? Ji, cytological terms denotes the cell. Basically, it is based on the cell's number, cell structure, the chromosome number. All the information related with cell comes under the cytological information. Now, we will first see the division Algae. Algae is the simple, thalloid, autotrophic, chlorophyll bearing, aquatic organism. They also occur in the moist stones, soils and wood. Some also occur in association with fungi and animals, for example on sloth bear. Here you can see the picture of lichen, algae and sloth bear, and the green fur on sloth bear is due to the presence of certain algae. The form and size of algae is highly variable. It can be so small that will be microscopic, for example Calamidomonas. It can form colonies also, for example volvox, and it can be have filaments also, for example Spirogyra. Reproduction. The various forms of reproduction in this division are vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. They reproduce vegetatively by fragmentation. Each algae will break down into various fragments and each fragment will develop into a new algae. Asexual reproduction takes place by the productions of spores. For example, zoospores, the most common one. They are flagellated, it means they have flagella for motility. They germinate and give rise to new plants. And sexual reproduction by the fusion of 2 gametes, oospores and
sexual reproduction now. Here we will see three types: isogamous, anisogamous and oogamous. Isogamous means fusion of gametes similar in size. Here you can see the picture also for isogamy. They may be flagellated or may be non-flagellated. Next one is anisogamous, fusion of two gametes dissimilar in size. And the last one is oogamous, fusion between one large non-motile female gamete and a smaller motile male gamete. Here the term motile means, or non-motile, it represents the movement. Motile means moving male gamete and non-motile means not moving anywhere. For example, volvox and fucus. So now we will see some advantages or the benefits of algae division. Through photosynthesis, they fix half of the CO2 on earth and increase the level of dissolved oxygen. So now we can understand the importance of algae in plant kingdom as well as for this universe. They are primary producers and the basis of food cycles of all the aquatic animals. About 70% of species of marine algae are used as food. For example, Porphyra, Laminaria and Sargassum. All these algae species are used as food for us. Agar from Gelidium and Gracilaria is used to grow the microbes, and ice creams in jellies they are also used. Some marine brown and red algae produce hydrocolloids. What do you mean by hydrocolloids? It is the water holding substance. For example, algin and carrageen. These are used commercially to hold the substances in aquatic environment. Protein-rich unicellular algae is used as food supplement by space travelers. So now we will see the different classes of algae. Here you can see three different classes: Chlorophyceae, also known as green algae; Phaeophyceae, also known as brown algae; and Rhodophyceae, also known as red algae. We will study Chlorophyceae or green algae first. Chlorophyceae is unicellular. It means the whole body is made up of single cell only. Colonial or filamentous. It may form some colonies with other members or it may have some filaments. It is usually grass green due to the pigments chlorophyll A and B in chloroplast. The chloroplast shape may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped. Chlorophyceae, most of them have one or more storage bodies known as pyrenoids. It is located in chloroplast. These bodies contain protein besides starch. Some algae of Chlorophyceae class store food as oil droplets. They have rigid cell wall made up of an inner cellulose layer and outer pectose layer. Chlorophyceae, most of them, for example, Calamidomonas, Volvox, Eulothrix, Spirogyra, all are examples of Chlorophyceae. You can see the various pictures. Reproduction in Chlorophyceae, vegetative propagation as I told you earlier by fragmentation. Asexual reproduction by flagellated zoospores and sexual reproduction
by isogamous, anisogamous or oogamous. The next तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी की। और बच्चों, आपको पता चला कि देयर आर क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्गी। हमारे पास 3 क्लासिफिकेशंस हैं जिसके बारे में आपको बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप हम अपनी क्वेरीज हम तक ज़रूर पहुंचाएं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800440559। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class11@cit.nic.in। हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं तो लाइव चैट बॉक्स में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जो सबसे तेज़ माध्यम है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग योर पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर लाइव सेशन, क्योंकि हम ये सत्र सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं और आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ जानने को और सीखने को मिल रहा है एल्गी से जुड़ा हुआ। तो मैम, जैसे आप बता रहे थे, आपने बेनिफिट्स ऑफ एल्गी के बारे में बताया, आप क्लासिफिकेशंस के बारे में बता रहे थे, ग्रीन एल्गी के बारे में बता रहे थे, तब हम उसे कंटिन्यू करते हैं मैम। जी मैम, बिल्कुल। तो फर्स्ट क्लास हमारी क्लोरोफाइसी थी। अब हम नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे एल्गी डिवीजन में। नेक्स्ट क्लास है फियोफाइसी, which is also known as brown algae. Mostly marine forms is there in brown algae and they show great variation in size and form. It may be simple branched, filamentous, profusely branched. For example, ectocarpus and kelps. They have also chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls. They vary in color from olive green to brown, depend on the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin. Here we can see the one difference between chlorophycy and phiophycy, that is the pigment. Xanthophyll pigment is majorly present in phiophycy, which gives the color brown. Food, storage of food is there as complex carbohydrates, laminarin and mannitol. The vegetative cells have cellulosic wall covered by a gelatinous coating of algin. Protoplast of these algae contain plastids, central vacuole and nucleus. Plant body is attached to substratum by a hold fast. You can also see the image of laminaria having holdfast, stipe and frond. Plant body is attached to substratum by holdfast. They have a stalk known as stipe and leaf-like organ known as frond. For example, ectocarpus, laminaria, sargassum and fucus. Reproduction in phiophycy takes place by fragmentation. Asexual reproduction takes place by biflagellated zoospores. What does it mean biflagellated? It means they have 2 flagella, 2 unequal laterally attached flagella. And sexual reproduction takes place by isogamous, anisogamous or oogamous. Union of gametes, the male gamete or the female gamete in case of oogamous occurs in water or within the oogonium. Gametes are pear shaped, bearing 2 laterally attached flagella. The last class that we are going to have in this session is rhodophyceae, which is also known as red algae. They have red thallus due to the red pigment phycoerythrin. So, one major difference between the 3 classes is the presence of major pigment. In chlorophyceae, we have chlorophyll A. In phiophyceae, we have xanthophylls, and in rhodophyceae, we have phycoerythrin, which gives the color red. Majority are marine, especially in warmer areas. They occur in both well lighted regions close to the surface of area and at greater depth in oceans where relatively little light penetrates.
most of them are multicellular. One of the another difference, as I told you earlier, that chlorophyceae is unicellular, but rhodophyceae, most of them are multicellular. They have complex body organization. The food is stored as fluoridine starch, which is structurally very similar to amylopectin and glycogen. Some examples of rhodophyceae are Polysiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. Reproduction in rhodophyceae takes place vegetative reproduction by fragmentation, asexual reproduction by non-motile spores, and sexual reproduction by oogamous only, having complex post-fertilization developments. In this table, you can see a brief comparison between chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae on different bases. The common name: chlorophyceae, green algae; phaeophyceae, brown algae; rhodophyceae, red algae. Major pigments: in chlorophyceae, chlorophyll A and B. No other pigment is present in chlorophyceae. In phaeophyceae, chlorophyll A, C and fucoxanthin, and due to the presence of fucoxanthin, there is a color of brown. In rhodophyceae, chlorophyll A, D and phycoerythrin. Due to the presence of phycoerythrin, color is red. Here you can see one similarity also, that chlorophyll A is present in all the three classes, that makes them autotrophic. Stored food: starch in chlorophyceae, mannitol, laminarin in phaeophyceae and fluoridine starch in rhodophyceae. Cell wall is made up of cellulose in chlorophyceae, cellulose and algin in phaeophyceae, and in rhodophyceae it is made up of cellulose. Flagellar number and position of insertion: 2 to 8 equal and apical in chlorophyceae, 2 unequal lateral flagella is present in phaeophyceae and they are not present in rhodophyceae. Habitat or the place where we can found them: chlorophyceae in fresh water, salt water and brackish water; phaeophyceae fresh water, salt water and brackish water; and some rhodophyceae is found in fresh water, but most of them are found in salt water and brackish water. Okay. So, as usual, we have 3 keywords for this session. हमारा आज का पहला कीवर्ड है क्लोरोफाइसी. हमारा आज का दूसरा कीवर्ड है फियोफाइसी. हमारा तीसरा कीवर्ड है rhodophyceae. So those were the keywords for this session. Ma'am, you must be having homework for our learners, right? Yes, ma'am. Ma'am, please उन्हें explain कीजिए. जी, here you can see the homework. You have to make a comparison or you have to differentiate between different systems of classification that we have learned in this session. That is artificial system, natural system, phylogenetic system. And the one question is there also: differentiate between chlorophyceae, phaeophyceae and rhodophyceae. Modified homework is also there. Question number 1: which classification system is given by Carl Linnaeus, Bentham and Hooker? And the next question we have is: name the class of algae which is also known as red algae,
green algae and brown algae. So you have to name, these common names are given to you and you have to name the various classes. ओके और आपको जो ये होमवर्क है इस होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट में हमें भेजना है बच्चों। सबसे पहले यू हैव टू राइट योर नेम, then your class, then your school name and address, then after our expert's name, आज की डेट, आज जो सेशन की डेट है, और देन आपका फ़ोटोग्राफ जो कि पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लगाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आपको ये होमवर्क हमें भेजना है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है dth.class11@cit.nic.in। तो ये तो बात हुई होमवर्क सबमिशन फॉर्मेट की। मैम जाते जाते आप क्या कुछ इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं या बात है आप बच्चों को बताना चाहेंगे एल्गी के बारे में? मैम जी, जब भी हम एल्गी के बारे में पढ़ें तो हमें जिन बातों का ध्यान रखना है वो ये है कि किन सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर इन्हें क्लासिफाई किया गया था। जैसे कि हमने 3 सिस्टम्स की बात करी, तो रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और अलग अलग स्पीशीज़ ऑफ एल्गी को डिस्कवर किया जा रहा है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान देना है क्योंकि यह चीफ प्रोड्यूसर्स हैं ओशन में, तो इनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे कि इन्हें नुकसान ना हो। बिकॉज हमने देखा कि 50% ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारी अर्थ पर इनके थ्रू ही फिक्स की जाती है एंड दे आर द मोस्ट चीफ प्रोड्यूसर्स फॉर ऑल द एक्वेटिक फूड चेन्स। और किसी भी फूड चेन में कुछ भी इशू आने पर कहीं ना कहीं वो हमें भी इफ़ेक्ट करेगा। जी, तो मैम जैसे आपने बोला कि ये बताया हमें कि ये ऑक्सीजन 50% प्रोड्यूस करते हैं और ओशन में ये एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल मैम। तो एल्गी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और उसके बेनिफिट्स के बारे में हमने जाना, क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने जाना और काफ़ी बातें हैं जो और भी हम जान सकते हैं, धीरे धीरे ज़रूर जानेंगे। लेकिन अभी टाइम हमें अलाउ नहीं कर रहा है कि हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं, हमें इसे वाइंड अप करना होगा। लेकिन जाने से पहले रेखा मैम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो वेरी मच कि आप स्टूडियो आए और आपने प्लांट किंगडम में हमारे सभी लर्नर्स को इतनी अच्छी बातें बताई और एल्गी की इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो वेरी मच। साथ ही यहाँ पर हम तबस्सुम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इससे पहले कि हम आपसे इजाज़त लें, हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी सूचना साझा करना चाहते हैं NCERT की पाठ्यपुस्तकों से संबंधित। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्यपुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पाठ्यपुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे, पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। और यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे जो है ncertbooks.ncert.gov.in। और सभी पाठ्यपुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी। इनके अलावा यदि आप इसका PDF वर्जन चाहते हैं तो आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई-पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट ज़रूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। अभी फ़िलहाल मैं रेणु भट्ट ले लेती हूँ आप सभी से अनुमति, लेकिन आप बने रहिए eVidya चैनल्स और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और अधिक ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के लिए। नमस्कार।